Hey guys, what's up and welcome to part 21 of Hogwarts Legacy। लास्ट एपिसोड में अपन ने दो मेन मिशंस किए थे एंड अब अपन गेम के उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अपने कुछ मिशंस क्या कहते हैं जो लॉक्ड एरियाज है वहाँ पे आने लग गए। सो बेसिकली अगर तुम हॉगवर्ट्स लेगेसी का मैप देखो, कुछ एरिया है वर्ल्ड मैप पे जिसे अपन अभी एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो लोकेशन है इतने, जैसे कि तुम देख सकते हो कुछ साइड मिशंस वगैरह यहाँ पे आना चालू हो गए। ये ब्रूम का मिशन, अपने जो फ्लाइंग ब्रूम है उसका नेक्स्ट अपग्रेड। एनीवेज एट द मोमेंट अपने पास एक मेन मिशन है जो अपन को थर्ड ट्रायल के तरफ लेके जाता है, बट उसके अलावा दो साइड मिशंस भी है। एक साइड मिशन है नैटी का, जो मुझे लग रहा है प्रॉबेबली वो ट्रैक डाउन कर रही थी ना पोचर्स, नहीं पोचर्स को तो ये ट्रैक डाउन कर रही थी पॉपी, सॉरी पोचर्स नहीं, ऐश वाइंडर्स, या ऐश वाइंडर्स जो इवल मेजर्स है उनको ट्रैक डाउन कर रही थी, हार्लो वगैरह। तो मे बी उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। और पॉपी का मिशन ये है कि अपन ने एक ड्रैगन को बचाया था तो उसका एग अपने पास है, तो मे बी वो एग वापस उस ड्रैगन को करना होगा। तो वो वाला मिशन है, तो ये दोनों अपन पहले करने वाले, उसके बाद थर्ड ट्रायल वाले मिशन की तरफ चलेंगे। एनीवेज सबसे पहले मुझे मैप ऑफ रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाना है। अगर आप लोग को याद हो तो कुछ एपिसोड पहले अपने थ्रेस्ट्रल्स को ब्रीडिंग के लिए छोड़ा था, तो अभी प्रोबेबली वो मिशन कंप्लीट कर सकते हैं अपन। सो बेसिकली वो मिशन कंप्लीट करने के लिए जो ऑफस्प्रिंग आते हैं बच्चे, उनको तुम्हें फीड करना है और ग्रूम करना है। थ्रेस्ट्रल्स को यहाँ पे छोड़ा था। ये रहा एक छोटा थ्रेस्ट्रल, ये देखो। I should let Deke know about the newborn Thestral. ओ, जो ऑफस्प्रिंग्स है वो भी तुम्हें देते हैं मटेरियल्स, मुझे नहीं पता था। आई थिंक अपन ने कई और भी लगाए थे, एक सेकंड ज़रा देख के आते हैं। या तो यहाँ पे, नहीं तो बाजू में वो जो सी वाले एरिया, नहीं यहाँ यहीं पे लगाया था। किसको लगाया था यहाँ पे अपन ने? मुझे याद नहीं आ रहा किसको लगाया था। ऑफस्प्रिंग किसका है, कुछ दिख रहा है ये यहाँ पे छोटा? ओ यस, ग्रिफिन को ही लगाया था, ये रहा। ये व्हाइट और ब्लैक मिक्स है, लॉल, दैट्स नाइस। दो कलर्स है इस पे। ओके लेट्स गो। आई थिंक मेरे पास और मटेरियल्स मिले हैं मुझे स्टैचूज ना लगाने के लिए। एक सेकंड चेक करते हैं। यस, और भी स्टैचूज मिले। ये ग्रेपहॉर्न कुछ है, ये वाला बीस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं किया, बट ये गेम में तो है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं। ये ठीक है साइज। ये वाले बीस्ट को भी तुम कैप्चर कर सकते हो। फिलहाल अभी तक ये गेम में मिला नहीं है, मुझे लग रहा है प्रोबेबली जो लॉक्ड एरिया ना वहीं पे होगा ये भी।
Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Oh, अच्छा, फिनिक्स ने उसके मास्टर को गिरा दिया. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. मुझे लग रहा है डीक का कोई मिशन आएगा जिसमें अपन प्रोबेबली फिनिक्स को में भी पकड़ सकते होंगे, क्योंकि फिनिक्स के फेदर्स तो चाहिए कुछ चीज़ें बनाने के लिए. ये क्या आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, दूसरे साइड मिशन का होगा. हॉग्समीड पे इसलिए टेलीपोर्ट नहीं किया एक्चुअली. हॉग्समीड से वो लोकेशन पास में, लेकिन हॉग्समीड के अंदर तुम ब्रूम नहीं यूज कर सकते. तुम्हें वॉक करना पड़ेगा अगर तुम हॉग्समीड में हो तो. Who lived here, I wonder? आई थिंक सेकेंड अपडेट के बाद ना तुम्हारे पास ये जो बूस्ट है ना, जो अपन माउस का क्लिक करके बूस्ट दबाते हैं, वो अनलिमिटेड हो गया. क्योंकि जो येलो मीटर दिख रहा है ना तुम्हें, वो देखो कम नहीं हो रहा है. पहले वो येलो मीटर कम होता था. Are you ready to put an end to Harlow? ये मिशन में अपन हार्लो से लड़ेंगे क्या? हार्लो अगर तुम्हें अभी तक पता ना हो तो विक्टर रूकवुड का राइट हैंड मैन है काइंड ऑफ. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. ओके, सो इससे पहले नैडी का जो मिशन था उसमें अपन ने मिस्टर पिकल के सन को बचाया था. एंड उसमें बताया था कि मिस्टर पिकल के जो बचे हुए फ्रेंड्स हैं उनको भी हार्लो मारना चाहता है. एंड उनके पास में भी हार्लो के अगेंस्ट एविडेंस हो कुछ. पिकल नहीं, सॉरी बिकल. मैं अभी तक पिकल समझ रहा था. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. अच्छा, ये लोग हॉग्समीड के अंदर रहते हैं क्या? कि हॉग्समीड में इनका दुकान है? ये क्या हो गया भाई? ओह शिट, बहुत गंदा. बीच में तो स्टक हुआ था क्या? इस तरफ चलते पहले. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle.
He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. ये जोंको का ये देखा, ये जो दुकान है ना, ये बेसिकली ट्रिक्स का दुकान है। यहाँ से तुम कुछ खरीद नहीं सकते, बट कुछ इंटरेक्शंस है यहाँ पे जो तुम कर सकते हो। मैंने भी सारे तो नहीं देखे, बट कुछ कुछ है इधर। ये बलून वाला हो गया, ये क्या? ओके, दिस इज द क्लाउन। और भी कुछ एक दो चीज़ है जो तुम यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसे ही सिमिलरली एक कैंडी शॉप भी है जहाँ पे अलग अलग टाइप की कैंडीज बनती है। तुम्हें अगर याद हो हैरी पॉटर के फर्स्ट मूवी या सेकंड मूवी में, फर्स्ट या सेकंड मूवी में एक में था जिसमें वो लोग कुछ अजीब अजीब के कैंडीज खाते हैं एंड उनके कान वगैरह में से धुआं आने लगता है, तो उस टाइप की कैंडीज है वो शॉप में। वो भी हॉग्समीड में ही है, बट वहाँ पे भी तुम कुछ खरीद नहीं सकते, बस ऐसा इंटरेक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। ये देखो, Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Mrs. Rabe should... Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. ओके, ये नोट है जो Some इसको evidence worth hanging on to. वार्निंग नोट जो मिला था इसके हस्बैंड को किडनैप करने के बाद।
hope it's not too late. We're on the right track. Now फाइनल to एक find the बंदा last of बचा है Mr. ना. Bickles. Yeah. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. हार्लो इसको बेसिकली ब्लैकमेल कर रहा है. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. हार्लो किधर है? आई गेस अपन प्रोबेबली उसे सीधा हरा सकते हैं. अपन ने अभी कितने 2 अनफॉरगिवेबल कर्सेस भी सीख लिए. इतना टफ नहीं होना चाहिए. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. अरे यार, ये क्या इधर उधर भागा है? एटलीस्ट फिर यहाँ पे हॉग्समीड में ब्रूम पकड़ा देते हैं अपन को. ब्रूम भी नहीं पकड़ाया. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. इसके अंदर Revelio! ये तो हॉग्सहेड है ना. Naughty little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. सेलर. अच्छा बड़ा एरिया होगा नीचे देखना. एशविंडर हाइडआउट लिखा हुआ था. एशविंडर्स वही है, रूकवुड के फॉलोअर्स ही है. बेसिकली जो रूकवुड के फॉलोअर्स है वो एशविंडर्स है. जो गॉब्लिन रैनरॉक को फॉलो कर रहे हैं वो लोग लॉयलिस्ट है. एंड फिर उस इन दोनों के अलावा पोर्चर्स है गेम में जो बेसिकली एनिमल्स को पकड़ते हैं. तो ये 3 Footprints led to this टाइप्स है room. गेम में. तुम बोल सकते हो 3 ग्रुप्स है. उसके अलावा फिर मकड़िया और इनफ्री और सारी चीजें. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly.
better be sure I'm not seen. Revelio! When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just... It's not gonna work. Using that girl as bait, no one's coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student. यहाँ पे हार्लो है क्या? इनमें से कोई हार्लो है क्या? पता नहीं। वो बीच में जो बंदा खड़ा है उसने थोड़े अलग कपड़े पहन रखे, थोड़ा नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। हार्लो को अपन ने एक ही बार, एक या दो बार देखा था। नहीं, ये कोई और है, ग्वेंडोलिन जोल। मतलब बेसिकली बॉस फाइट तो है लेकिन हार्लो नहीं है। Who's there? Expelliarmus. Bingo! Incendio! Protego! Stupid one! Incendio! You're dancing on dangerous ground, my friend. Is this Hogwarts back? Think again. Expelliarmus! Stupid! If I had to come and find you! You're going to regret that. Bingo! Look for both show! Hide for edge. Might want to look up. What have you done? Incendio! Expelliarmus! You're only delaying the inevitable. Bingo! I'm just warming up. Descendo! This is your foot. Quite conductive, aren't we? Glacier! Descendo! ये कौन है? विल्बर्ट। विल्बर्ट कौन है? You are as dear to me as Augury, whose voice foretells the coming rain. You are as loved to me as a curb could be, whose loyalty is true and plain. You have cast a spell over my heart. I want it not undone. फिल्बर्ट वो बंदा था जिससे अपन ने सबसे पहले बात की थी। वो जो 3 लोगों से अपन ने अभी बात की, वो जो फ्रेंड्स थे मिस्टर बिकल के, उनमें से पहला वाला, क्योंकि उसने बोला था ना उसकी वाइफ पोएट थी। एंड दिस सीम्स लाइक अ पोएम, नॉट A श्योर। book of poems that was taken from वही Agnes है, Filbert. वही है, वही है। He'll be thrilled to have this back. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Revelio! अरे वहाँ पे एक चेस्ट छूट गया। ये रास्ता किधर जा रहा है? ओके, ये तो वापस बेसिकली अच्छा वो स्टेल्थ के लिए था आई गेस। तुम्हें अगर छुप छुप के लड़ना हो ना तो उसके लिए। अरे मेरे गियर स्लॉट्स फुल हो गए। ये एपिसोड, पिछले एपिसोड ख़त्म करने के बाद मैंने बेचे तो थे चीज़ें, या फिर मैं भूल गया होगा, पता नहीं, लेकिन गियर स्लॉट्स फुल है। यहाँ पे कहीं पे एक बड़ा चेस्ट देखा था मैंने।
ओह, मुझे लगा ये आए वाला चेस्ट है। गियर स्लॉट्स फुल है। अब ये जो लूट मैंने मिस किया है ये सीधा अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया क्या, क्योंकि मेरे गियर स्लॉट्स फुल थे। ये पिछले या उसके पहले वाले एक एपिसोड में इसमें अपन सेबेस्टियन का साइड मिशन कर रहे थे, तब भी एक ऐसा चेस्ट मिला था। तो उसके अंदर वाले लूट पता नहीं, उसका मतलब क्या तुम्हें मिलेगा नहीं उसका लूट अगर तुम्हारा गियर फुल है तो काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब अजीब मैकेनिक्स है मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, वहाँ पे कुछ गोल्डन है कॉइन था क्या? ऑरेंज वाले ना, ऑरेंज वाले कभी कभी ये भी होता है, लेजेंडरी गियर भी होता है, कभी कभी कॉइन निकलता है। Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. अच्छा वो दूसरा है, वो मिसेस रेब का हस्बैंड जो था ना, इसको किडनैप किया था। Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not Revelio. with someone. It must have looked like something. आप लोग को याद है कुछ एपिसोड पहले अपन ने एक साइड मिशन किया था जिसमें अपन ने हॉगवर्ट्स के एक स्टूडेंट के अंकल को बचाया था, एंड उसका वॉन्ड भी अपन को ऐसे रिकवर करना था। Could be in there. Could be in there किधर? My wand is somewhere in this room. I can tell. Somewhere in this room बोल रहा है ये। ये रूम में तो कुछ भी चमक नहीं रहा है, बट ओह शिट, Hamora. wasn't expecting that। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक चेस्ट हिडन था। Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा है कि एक ऐसा गुंडा जो लोगों को वगैरह मार देता है, अगर वो उसके पीछे आए, वो एक विजार्ड को कैप्चर तो करके रखता है एंड उसका वॉन्ड भी सेफ रखता है तिजोरी में। मतलब ऐसा एक बंदा होता तो एक्चुअली उसे उसका वॉन्ड तोड़ देना चाहिए था। थोड़ा Mr. Rabe, I found your wand. स्क्रिप्ट राइटिंग में Well गड़बड़ हो done. गई उधर। I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. तो लग रहा है केज टूटने वाला है बाहर। नहीं लॉल। Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Find Otto Dibble's love letter. Find a way out of Ashwinder's hideout. अच्छा हाँ, वो तीसरे बंदे का लव लेटर ना, पता नहीं वो किधर मिलेगा। बाहर एक आधा चेस्ट तो है जो उठा की खोला नहीं अपन ने, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैश फाइंडर सबको तो मैंने पेल दिया, छुपने की क्या जरूरत है अब।
ओके, वहाँ पे ऊपर कुछ चेस्ट है। ओह, मिल गया, चलो। Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. ये क्या हुआ? जैसा शील्ड पहले भी था क्या, ऐसा कुछ ऐसा अजीब सा, जब अपन ऊपर से आए थे? याद नहीं है मुझे। ओह, सबसे एक लेजेंडरी वाली चीज तो बाहर ही पड़ी हुई थी जो सबसे पहला वाला चेस्ट अपन ने मिस किया। आई थिंक अपन ऑफिसर सिंगर को शायद एविडेंस देंगे एंड फिर उसके बाद ऑफिसर सिंगर का हो सकता है कोई मिशन आए आगे जिसमें अपन उसे हेल्प करें हार्लो को कैप्चर करने में। मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैंने बताया था ना, जो भी ईमेल थ्रू तुम्हें साइड मिशंस आते हैं ना, साइड क्वेस्ट, वो बड़े रहते हैं, इतने छोटे छोटे नहीं रहते। ऑफिसर सिंगर इधर ही खड़ी थी क्या? Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashfinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. ओए, ऐसा क्यों लग रही है? उनके साथ मिली है क्या? You may wish to speak with your mother about this Ruth before Singer. I do. My mother will क्योंकि not इतने like एविडेंस this. काफी क्यों नहीं है इसके लिए? Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Revelio. Okay, that completes the mission. Oh, यहाँ पे एक चेस्ट है। $500 डॉलर नहीं, जो भी करेंसी है इनकी। Wingardium Leviosa. ये विंगार्डियम लेवियोसा नहीं रे भाई, बोल लूमिनस। Lumos. ये किधर है? बैरल। सो बेसिकली ये पेंटिंग्स का पजल ऐसा है कि तुम्हें लूमोस करना है। लूमोस के बाद तुम्हें एक लोकेशन दिखेगा, तुम उस लोकेशन के पास जाओगे तो वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा मौत दिखेगा कि जो बटरफ्लाई जैसे क्रिएचर है, उनके पास तुम वापस लूमोस करो, वो उड़ के तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और उनके यहाँ पे लाके फिट करो तो तुम्हें एक फील्ड गाइड का पेज मिलेगा जिसके तुम्हें अराउंड 80 के आसपास 80 एक्सपी मिलता है। एंड जो तुम्हारा फील्ड गाइड वाला साइड कलेक्टिबल है वो तुम कंप्लीट करते रह सकते हो। कलेक्टिबल्स कंप्लीट करने के अलग अलग गियर मिलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है दूसरे एपिसोड्स में। एनीवेज, एक और मिशन था ड्रैगन एग वाला, वो कर लेते हैं आई गेस। मेन मिशन अपन अगले एपिसोड में कर लेंगे। हॉग्समीड में ही है क्या? Yep, it's in Hogsmeade. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package,
but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. या फिर हो सकता है पोचर्स ने इसके ग्रैंडमा को पकड़ लिया. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. ये क्या हुआ? गेम सीधा अपन को टेलीपोर्ट कर रहा है क्या? क्लोज कहीं पे ऐसा लग रहा है मुझे. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. ये लो भाई उड़ना भी Oh, मना and कर one दिया. more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Poor thing must be worried sick, wondering what For happened what it's to her worth, she egg. doesn't seem to have spotted us yet. Expelliarmus! Accio! Incendio! How many they brought to capture her? At least 10 usually. Revelio! अरे यार मैं हॉग्समीड में वापस सामान बेचना भूल गया. एनीवेज ये मिशन के बाद बेचते हैं. Accio! Reparo! She's fantastic. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? Revelio! Don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. ओह ये वो ग्रेप हॉर्न. Or just raring for a fight. ये स्टैश अपन वापस खोल सकते हैं बट वो जो एक बड़ा सा मेटालिक स्टैश है ना वो तुम एक बार खोल दिया एंड तुम्हारा इन्वेंटरी फुल है तो तुम्हारी चीजें गई ऐसा हो जाता है.
भागना। Watch out! It's her domain. She'll make keep at it. We've just got to make it. Well, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try. Get to that opening below her. If we can get to that, we can get to the nest. अरे ये वॉक क्यों कर रहा है? Look, underneath her. I think ये अपने आप क्राउच करता है और यहाँ से फिर निकलता ही नहीं है जब निकलना होता है। एक सेकंड वेट करते हैं। she's leaving. Quickly. Brilliant. I suppose यही होगा उसका डेन, नहीं नेस्ट। There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Revelio. Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. उसने अपना नेस्ट बदल लिया। स्मार्ट That चॉइस। was brilliant. नहीं तो And did you पॉन्चर्स see how वापस आ clever? जाते। She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. मैंने बोला था ना इसके ग्रैंडमा को पकड़ लिया बस शायद। मिशन अभी भी बचा है। मैंने सोचा मिशन खत्म हो गया जल्दी 15 मिनट में। How could I have been so blind?
है खत्म हो गया। आई गेस उसका मिशन वापस आएगा पॉपी का। ओके 2 सेकंड देखते कुछ दूसरे मिशन आ रहे थे। या ये सारी चीज़ें बेचनी है। ऑक्सीजन में कपड़ों की भी दुकान है, तो अगर तुम्हें लेजेंडरी गियर चाहिए तुम्हारे लेवल के आसपास वाला एंड तुम्हें मिल नहीं रहा है तो तुम सीधा खरीद भी सकते हो। Ready for a little change in fashion, are we? ऑब्वियसली वो Plenty नॉर्मल to से choose मतलब from तुम here, जितने so का take बेचते your हो time. उससे ज़्यादा का महंगा रहता है। मतलब अगर तुम समझ लो लेजेंडरी गियर 200 का बेचते हो तो खरीदना 600 का पड़ता है, बट तुम्हें अपने लेवल का मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला सही लग रहा है, गॉथिक अटायर 94 81 82 या लेट्स गेट दिस 500 का ही है। You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. चीज़ें बेचनी भी तो है। ये तो अभी खरीदा। I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. $83। ओके इसके पास और क्या है? 98। व्हाट द हेल, ये कैसे मिस कर गया मैं? अपन ने जो लिया था वो 94 था ना। आई गेस उससे काम चला सकते हैं। 4 का इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। 81 88 88 96। Yeah, let's grab You won't be this। disappointed. That's a Gladrax promise. 97। ओके लेट्स गो। कुछ I बढ़िया suspect चीज़ें you have a उठाई sharp अपन ने। eye for fashion. टाइम फॉर अ चेंज। 96। ओके ओके जैकेट कुछ मैचिंग टाइप वाला। ये अच्छा लग रहा है यार। दिस इज एक्चुअली रियली लुकिंग नाइस। और कौन सा अपने पास? ये भी सही लग रहा है। ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये एक्चुअली पहनोगे तो तुम्हारे अंदर का भी अटायर दिखता है। इस वाले में अटायर अंदर का दिखता नहीं है। ओके अभी स्कार्फ कुछ एक मैचिंग वाला, थोड़ा सा ब्लैकिश है, डार्क कलर। ओके दैट्स नाइस। दिस इज ऑल्सो नाइस। ये तो फुल ब्लेंड कर गया अपने कॉस्ट्यूम के साथ। ये वाला स्कार्फ एक थोड़ा सा अलग से दिखने टाइप वाला स्कार्फ चाहिए। ये सही है। ओके तो अपन वैसे एपिसोड तो रैप अप करने का टाइम हो गया है। या तो अपन एक सेकेंड, आउल वाले में कुछ मैसेज दिख रहा है। आउल पोस्ट में कुछ मैसेज आया है। The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that you are doing this. Thank you for me. Thank you from me and Rosie both. We are just living for our honeymoon. After we tell Mr. Hill of our recent marriage, wish me luck. अच्छा इतना ही था उसका, कोई दूसरा मिशन नहीं था। उसने बस बताया अपन को। क्वेस्ट किधर है? क्वेस्ट में भी कुछ भी नहीं आया। द हेड मिस्ट्रेस स्पीक टू द पोर्ट्रेल ऑफ। एक काम करते हैं, जाके बात करके आते हैं, क्योंकि मुझे याद है पिछले बार जो सेकेंड ट्रायल स्टार्ट होने से पहले जो एक मिशन था उसमें सिर्फ अपन को जो सेकेंड ट्रायल वाला प्रोफेसर था रूकवुड, बस उससे बात करनी थी। एंड उसके बाद अगला मिशन था कि अपन को ट्रायल की लोकेशन पे जाना था। तो मे भी हो सकता है ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन वाला मिशन हो। तो अपन वो कर लेते हैं आज के एपिसोड में, एंड अगले एपिसोड में सीधा ट्रायल वाले लोकेशन पे चलेंगे।
Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. हेडमास्टर के ऑफिस में, यानी कि रात को जाना पड़ेगा जब मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई नहीं रहेगा ना तब. Access to the headmaster's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. ओके, एनीवेज एक काम करते गाइस, एपिसोड अपन यहीं पे रैप अप करते हैं. अगले एपिसोड में प्रोफेसर फिग से आके बात करेंगे कि हेडमास्टर के ऑफिस में घुसना कैसे है, एंड प्रोबेबली ट्रायल भी अगले एपिसोड में ही खत्म कर लेंगे. सो एनीवेज आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.